Good morning, English learners of all levels, and I welcome you all to my channel. If you are new, please follow the playlist year 2023 and start from the day one so you connect better with me, so you start from the scratch, and so you understand the way I teach. Okay, so you understand the strategies that I believe in. Okay, according to me, I feel you must speak about your daily experiences, your past experiences, so you become better in English language easily and you feel connected with the language, guys. Today, these days, we just finished models recently, and today we are learning how to use conjunctions or connectors in our daily life. So again, I have used here sentences which are real life sentences, guys, and each connector I have highlighted. Let me read it aloud for you. And, neither, nor, but, so, as soon as, still, in spite, still, but still, whatever, wherever. Okay, so these are the connectors, conjunctions, which are highlighted in green background. Okay, green base. So I have written here 10 sentences. I would want you to make use of all these connectors if you want to practice and learn or be best in using the connectors, okay, in daily life, guys. Then you require to practice, use all of them, and using each connector, write 10 sentences. That is how you get to practice, and that is how you reach next level in the language. And so far we were really speaking about real life experiences, and the same thing I want you to do it with you. Okay, I mean, you should be doing the same personally at your end while practicing. Simply do write about your experiences, what you did in the morning, what happened today, how was your day. Okay, these are the best ways according to me to be best in English language, guys. Now let us start. The first sentence: I like to go out on weekends and ensure to eat something nice. मैं वीकेंड्स पे बाहर जाना पसंद करती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ खाऊं अच्छा. Okay, so we all do it, right? You write sentence that connects to you, that belongs to you, guys. Okay, I like to go on weekends and ensure to eat something nice. मैं मुझे वीकेंड्स पे बाहर जाना पसंद है और कुछ अच्छा खाना में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं. नंबर टू, शी नाइदर पिक्स माई कॉल नॉर रेस्पॉन्स टू माई मैसेजेस. ना तो वो मेरे फ़ोन उठाती है, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है. सो आई हैव यूज्ड इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी नाइदर पिक्स माई कॉल नॉर रेस्पॉन्स टू माई मैसेजेस. दोनों का नो है, गाइज, आंसर. ओके, ना तो वो मेरा फ़ोन उठाती है, ना तो वो मुझे मेरा मैसेज का रिप्लाई करती है. And actually we use connectors and conjunctions to to concise our speaking or to concise our write up. Concise means to shorten the number of sentences that require to send or give a message. Okay, in if I tell you in simple language, connectors का यूज होता है जहां पर हमें अपनी बात कम से कम वर्ड्स में बोलनी होती है. देयर वी नीड कनेक्टर्स, गाइज. और अभी तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियोस को प्रैक्टिस की होगी आपने. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी कनेक्टर्स. ओके, सो ऑलरेडी आपको ग्रामर की प्रैक्टिस हो चुकी है इनडायरेक्टली, गाइज. ओके, बिकॉज आई डिड नॉट स्टार्ट टीचिंग यू ग्रामर इन द बिगिनिंग बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग. आई हैव सीन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स टेकिंग अ स्टेप बैक बिकॉज ऑफ द ग्रामर. सो डीप में नहीं जाना है ग्रामर में, बस सुपरफिशियली आप सीखो. फोकस मोर ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. Okay, so I'm teaching you just basic grammar. Okay, I'm not going deep down. All right, now point number 3: he hit her hard but she didn't do anything. उसने उसको जोर से मारा लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया. बट मतलब लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया. ही हिट हर हार्ड बट शी डिडंट डू एनीथिंग. उसने कुछ नहीं किया. तो बट यू हैव टू यूज बट इन योर डेली लाइफ. ओके, जो भी वट एवर यू आर डूइंग, राइट अबाउट इट and use these connectors, guys. Practice is the key. You improve when you practice. Number 4, he was late so he felt sorry. वो लेट था इसके लिए उसे सॉरी फील हुआ या उसने सॉरी फील किया. ही वॉज लेट, सो मीन्स इसके लिए ही फेल्ट सॉरी. Number 5, as soon as I reached the airport I saw Shahrukh Khan. As soon as is the connector here. जैसे ही, as soon as का मतलब है जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची वहां मैंने शाहरुख खान को देखा. Simple. Number 6, they are still making a noise in spite of so many warnings.
वो लोग अभी भी शोर मचा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ, मतलब बावजूद, इसके बावजूद कि उन्हें इतनी सारी वार्निंग मिली है, वो लोग अभी भी शोर मचा रहे हैं इतनी सारी वार्निंग मिलने के बावजूद। तो इन स्पाइट का मतलब है बावजूद, और स्टिल का मतलब अभी भी, अभी भी। सो द कनेक्टर्स, they really shorten the number of sentences we need to convey our message. They are very useful part of English language, guys. They are very important, but you learn them when you practice more, when you read more. You just stick to my videos from the day one. You will learn full grammar, full tenses, because I have really used basic sentences, daily life experiences, guys, in order to make the language easy for you. Okay, I have conveyed all the messages in a very simple language. नंबर 7, वी आर स्टिल वेटिंग इन द क्यू। स्टिल का मतलब अभी भी, हम लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं। हो सकता है आप टिकट के लाइन में है, यू आर इन अ बैंक्वेट, यू आर इन अ होटल, यू आर इन अ रेस्टोरेंट। ओके, वी आर स्टिल वेटिंग इन द क्यू। स्टिल का मतलब है अभी भी खड़े हैं लाइन में हम लोग। नंबर 8, ही इज सिक बट स्टिल एनर्जेटिक। वो बीमार है बट फिर भी, बट स्टिल, फिर भी एनर्जेटिक है। नंबर 9, go wherever you want. Okay, जाओ जहाँ जाना है तुमको। Like we be little aggressive while using wherever, whatever, do whatever you want to do. Okay, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। We use them when we are little aggressive, but they are the connectors. Again, very important part of English language. So you pick up English language, guys, when you connect to daily life. Okay, simply talk about your morning routine, your afternoon routine, your evening routine, your talk about your office. Write simple sentences. Okay, and you will learn this technique when you follow my videos from the day one. And here, let me say thanks to you guys, and thanks for giving your valuable time. Thanks for bearing me, and I would really appreciate if you like the videos, okay, and share it with your loved ones, and if you subscribe to my channel. Thank you very much, guys, and I'll come back with the next video. Thank you.